तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था क्लासिफिकेशन, मेजर एंड डिसीजन एंड फीचर स्केलिंग। वो वाला पोर्शन थोड़ा सा नया था इन द सेंस कि हम लोग अधिकतर अज्यूम करते थे कि हमारे पास डेटा सेट जो रहता है वो एकदम क्लीन साफ सुथरा बन के मेरे को मिलेगा, बट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसा होता नहीं है। और कभी कभी हमको जो डेटा सेट मिलता है उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जिसका हमको उतना इम्पैक्ट है नहीं मेरे रिजल्ट में। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उस डेटा सेट को इतने बेकार तरीके से बनाया गया हो, इतने बेकार तरीके से स्ट्रक्चर किया गया हो, जिसमें एक फीचर के कारण ही मेरा रिजल्ट आ जा रहा है, बाकी फीचर का कंट्रीब्यूशन उतना मतलब इक्वली नहीं, यूनिफॉर्मली नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग वो यूज किए थे। आज वी विल स्टार्ट विद डिसीजन ट्री, which is a kind of supervised classification algorithm. ठीक है, this is a kind of supervised classification algorithm. Moreover, already ये क्योंकि classification algorithm है, you can also use it for regression purpose. You can also use it for regression purpose. तुम regression के लिए भी इसको use कर सकते हो, but it is ideal that go for the regression regression kinds. जब regression use करना हो, do not rely on this decision tree, but if you have to do for classification, this is a wonderful method. Okay, let's see what we all gonna discuss today. So in today's session, we'll discuss what are decision trees. We'll see what is this attribute selection measure. We'll see what is this pruning. Pruning क्या होता है and why is it important? We'll discuss what are the kinds of pruning, and then we'll have the implementation purpose. So let me head back to my OneNote and just tell me if it is visible or not. दिख रहा है सबको? Vanshika, are you able to see it? Sushant, perfect. So see what is this classification tool? First of all, it is a supervised learning technique. Means you have to provide a label. You have to provide whether your output belongs to label A, label B. If you're talking about binary classification, if you're talking about more than two classification, multi-class classification, then also you have to provide the labels. It is used for both regression and classification, but mostly it is used for classification. See what happens in a decision tree which looks something like this. Can you see it? Can you see it? You have a root node in which you have these different decision nodes, which will, and these are the branches. These are different branches. देख रहे हो ये branch, and these branches lead us to this leaf node. Leaf node is where उसके आगे अगर कोई ब्रांचेस नहीं है तो दिस इज नोन एज लीफ नोड। जैसे देखो लीफ नोड के नीचे कोई ब्रांचेस नहीं है, राइट, कोई ब्रांचेस नहीं है, वहीं पे आके मेरा क्लासिफायर खत्म हो जाता है। तो दीज आर योर लीफ नोड्स, एंड यू कैन सी within this entire decision tree we can have a small subtree here. A subtree is what? It is a it is as analogical as your set and subset. सेट में जैसे एक सबसेट होता है वैसे ही एक ट्री के अंदर एक और ट्री जो इसके अंदर बना, we call it a subtree. So what happens? You have your internal nodes. These are your nodes. So these represent the features. अभी हम देखेंगे features के बारे में, ठीक है? And your branches are actually your decision rules. We'll see किस रूल के बेसिस पे तुम ये डिसीजन को इधर ले गए और ये डिसीजन को इधर ले गए. Like how you have classified it to this part and this part. These are determined by your branches, and leaf are your outcomes. Okay, let me use some analogy here. Let me use some analogy.
And Vanshika, let us build a simple aim. Your aim is to evaluate a job offer. ठीक है, तुमको एक जॉब ऑफर को इवेलुएट करना है, यानी कि जॉब ऑफर में कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कंपनी ने तुम्हारे पास अप्रोच किया है कि वी हैव एक्चुअली हायर्ड यू फॉर दिस रोल. नाउ योर एम इज टू एक्चुअली डिसाइड व्हिच वन इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू. Which one is the best according to you? That you have to decide. So, can you think of different criteria जिसके हिसाब से तुम जज करोगे? For example, I can have something as, let us start with a very basic table. Let us start with a very basic table. Something as your salary. You can have salary, obviously. जैसा सैलरी कंपनी देगी उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा कि मुझे उस कंपनी में रहना है या नहीं. ठीक है. Then you have this concept कि क्या वो ऑफिस मेरे घर से दूर है, proximity. Obviously मेरा नेचुरल टेंडेंसी होगा कि मेरे घर के हमको नजदीक मिल जाए, although not necessary, but chances are कि अगर मेरे घर से नजदीक मिल जाए तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा. ठीक है. और लेट्स से कि अगर घर दूर है तो क्या मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है ऑफिस के साइड से? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या मेरे को ऑफिस दे रहा है? जस्ट अ सेकेंड. क्या मेरे को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑफिस दे रहा है? And then is my decision. So since it is a classification algorithm, I can only say yes or a no. ठीक है. ठीक है. ठीक है. Okay. Let us have something else. Let me list out some rules for you. Let us say salary should be in the range of, let's say, 70,000 and above. What do I mean? Let me erase this thing. I'm listing out some ground rules that your salary should be above rupees 70,000. ठीक है. दूसरी चीज है कि ऑफिस इज नियर. अगर घर के नजदीक तो अच्छी बात है, अगर ये केस नहीं है, एल्स ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको कंपनी दे. ठीक है. इस क्राइटेरिया पे तुम ऑफिस अपना मतलब जो भी तुमको ऑफर लेना है वो तुम चूज करोगे. तो लेट अस बिल्ड सम फ्यू डेटा. लेट अस से योर सैलरी इज 55,000. ठीक है. Let us say your salary is somewhere down the lane of 55,000. And let us say this proximity is also a yes, no. This is also a yes or no. Okay. So the company says कि although your salary is 55, I have your office very far. I'll have your office very far. And no, we do not provide any kind of transportation. So the obvious judgment would be you will not choose this company, right? Your obvious is you will not choose this company. Okay. Let us have some other value. Let us say your salary is 85,000. And yes, this job is near your house.
No, it does not provide any kind of transportation. So you may see on the basis of this and this criteria, पहला criteria match होगा कि 70,000 से ऊपर है, and also it is near to my home, so I can go for this job. I can actually go for this job. Pretty obvious. Pretty obvious. Let us have some other profiles. Let us have some other profiles. Let us say my salary is 90,000. My salary is 90,000. No, it does not lie near my home, and no, the office does not provide me any kind of transportation. So based on all these factors, I can say I'll not choose this job. Let us have one more profile. So we have this job offer of 75,000 rupees, and let us say the office is not near your home, but your office provides some kind of transportation facility for you. So based on all these, you can say I'll go with this job. क्लियर है वंशिका? हमने बस ये रूल जो हमने डिफाइन किया अपने लिए, हमने ये रूल जो अपने लिए डिफाइन किया कि माई सैलरी शुड बी अबव 70,000 रुपीज, मेरा ऑफिस घर के नजदीक होना चाहिए. अगर ऑफिस घर के नजदीक नहीं है, तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि कंपनी की तरफ से मेरे कुछ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, तो आई कैन वर्क फॉर दैट कंपनी. सो यू हैव दिस ऑल फैक्टर्स. So let us try to make a decision tree for this. Let us try to make a decision tree for this. So a decision tree is very easy to make. What you have to do is you have to start with a feature. You have to start with a feature. Let us say we'll start with this feature. We'll start with this feature. So my very first question is, let me have my automatic shapes. Let me have it something like this. So I can have something as, is salary greater than 70,000 rupees? So I can have something as a yes or a no, right? अगर no आया तो simply reject. Let me erase. अगर no आया तो simply do what? Simply reject the job offer. I don't need that job offer. I don't need it. But if it is greater than yes, let us see, do we have any other feature? So Kanishka, welcome for today's session. था late हो तो. So what I was saying, कि अगर salary is greater than 70,000 rupees, what next feature do we have? The next feature I have is proximity. So let us build it for proximity. So is it near home? Is the office? Is the office near home? Now also you have two cases. Now also you have two cases. A yes or a ठीक है. So what I'm saying, if the office is near your house, take that offer. What I'm saying, if the house is near your home, accept the offer. Accept it. Straight away, accept it. Do not think for anything. Straight away, accept it. Or else, if your house is not near your home, क्या कंपनी मेरे को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है? क्या किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है मेरे लिए?
ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के हिसाब से भी देर आर टू केसेस, yes or no? A yes or a no. If it is not there, straight away reject it. And if it is present there, accept it. So this was a complete decision tree. If I have to name it, I take it, figure. Decision tree. This is a decision tree. वंशिका आया समझ में? कनिष्का तुम तो थोड़ा लेट आई हो, आई एक्सपेक्ट तुम से इतना सेशन का रिकॉर्डिंग देख लो पहले जब मैं इसको लोड करूंगा, बट आई ट्राई टू मेक इट। हमने क्या किया देखो वंशिका, डिसीजन ट्री का मतलब होता है कि यू हैव टू क्लासिफाई समथिंग and you have to classify in such an order that whatever path you choose, it forms some kind of tree-like structure. Like a tree has a root node, it has some decision nodes, and last may it has some leaf node. It is the leaf node. If I have to select here, these are your leaf nodes. These are your leaf nodes. यहाँ पे decision तुमने लिया, ठीक है? These are your decision nodes. These are what? These are your decision nodes. These are branching to yes or no, ठीक है? And you have this very specific thing which is known as, जहां से हमारा सारा सिलसिला शुरू हुआ, this is known as root node, ठीक है? आया समझ में वंशिका, शशांक, कनिष्का? हमारे पास देखो देखो हमने कनिष्का हमने ये डिसाइड किया कि मेरे पास कुछ जॉब ऑफर है, और जॉब ऑफर का मेरे पास क्राइटेरिया ये है कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 70,000 रुपीज। अगर ये है तो आई नेक्स्ट चेक कि मेरा ऑफिस घर के नजदीक है। अगर घर के नजदीक है तो आई एक्सेप्ट द ऑफर। अदरवाइज क्या कंपनी मेरे को किसी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, आई हैव दिस डेटा सेट विथ मी, और मैंने ये डिसीजन ट्री बनाया कि लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट फीचर कि क्या सैलरी 70,000 के ऊपर है। इफ यस आई विल चेक वेदर द हाउस इज वेदर द ऑफिस इज नियर होम। अगर नहीं है तो आई विल रिजेक्ट द ऑफर, ठीक है? अगर ऑफिस के नजदीक है तो आई विल एक्सेप्ट इट। अगर ऑफिस के नजदीक नहीं है तो आई विल चेक क्या कंपनी कोई मेरे को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहा है। अगर दे रहा है तो आई विल एक्सेप्ट इट, अगर नहीं दे रहा है तो आई विल रिजेक्ट द ऑफर। दिस इज द डिसीजन ट्री, राइट? तुम मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि संजय भैया आपने ऐसा क्यों किया कि why have you started with this feature only, salary? Why haven't you started with proximity? Why haven't you started with transportation facility? This question may arise. So also let me also give you a nice thing. Let me also make one thing very clear. It works for both numerical as well as categorical data. अगर नंबर में भी है तब भी this decision tree will work, ठीक है? It is not only that, it will only work with categorical data. Yes, no, some category wise. If you have some kind of numbers, it will work in this similar way. So you have seen, you may ask कि संजय भैया आपने इसी से क्यों स्टार्ट किया? हम इससे भी तो स्टार्ट कर सकते थे, हम इससे भी तो स्टार्ट कर सकते थे। यस, हम कर सकते थे। एक एक प्रॉब्लम अगर कोई मेरे को है तो आई कैन हैव मल्टीपल डिसीजन ट्रीज। I can have multiple decision trees. अब होगा ये कि when I have a set of different multiple trees, सबका accuracy जो होगा वो अलग अलग होगा। Some decision tree would not be optimal. There is only one optimal decision tree.
फॉर अ प्रॉब्लम। इस केस में तुमको लग सकता है कि हाँ दिस इज अ प्रिटी ऑब्वियस वन। यहाँ पर तो हमने बहुत कम फीचर लिया, बहुत कम डेटा लिया। व्हाट वी हैव some very something like this. Let us say, for example, I can have something as your x, I can have your feature 1, feature 2, feature 3, so on till feature n, and then you have this output that is your y, and you have to predict yes or no. So class 1, class 2, something like this, positive or negative, something like that, positive or negative, something like this. So you may have multiple features. और हो सकता है कि features are mutually exclusive. Features are mutually exclusive. So उस केस में you may ask कि भैया हम कैसे समझेंगे कि हमें किस डिसीजन से, किस फीचर से स्टार्ट करना है क्लासिफाई करना? You may ask. Let me tell you, this problem is a very tough problem to solve. Like in computer science, there are some NP hard problems. There are few NP hard problems. You may search about it. These are known as NP hard problems. अगर तुम ऐसा सोचने जाओगे कि हम ऐसा अगर हम करें कि एक काम करते हैं, सब फीचर के अकॉर्डिंग हम एक बना के देखते हैं डिसीजन ट्री, और जिसमें जिसका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा आएगा हम उसको बेस्ट मान के यूज कर लेंगे। एक अप्रोच हम ये सोच सकते हैं, राइट वंशिका, शशांक, कनिष्का, कि ऐसा करते हैं जो बेस्ट मेरे पास मान लो 10 फीचर है, 10 फीचर के रिगार्डिंग हम बना के देखते हैं डिसीजन ट्री रूट नोड लेके, और एक्यूरेसी निकालते हैं हर एक के साथ। अगर हम एक्यूरेसी निकालेंगे तो हमको पता तो लग जाएगा सब काफी अच्छा कौन है, जो सबसे अच्छा होगा हम उसको फाइनल में ले लेंगे। यू मे आस्क अबाउट, लेट मी टेल यू, अच्छा तुम करने बैठोगी तो यू विल हैव एक्सपोनेंशियल टाइम। फॉर एग्जांपल, हाँ शशांक। संजय, जैसे तुम अभी ऊपर बताए थे कि हम लोग किसी भी के थ्रू हम लोग डिसीजन ट्री स्टार्ट कर सकते हैं ना, प्रॉक्सिमिटी इज द सैलरी। क्या उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चीज से हमारा डिसीजन ट्री बनेगा, कोई भी चीज से भी पर बन सकता है? अभी आने दो, अभी कुछ फैक्टर्स होते हैं उनसे 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 डिसाइड होता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मतलब ये डिसीजन ट्री एक ही रहेगा? डिसीजन ट्री एक ही रहेगा अच्छा, ठीक। और वही हम बनाएंगे अभी। मैं देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इफ दिस इज नंबर ऑफ फीचर्स, if I have to plot a graph between them, this would be something as like something like this. So what do I mean? Ki for a very small feature, let's say I have something for say this is your 5. So after 5 feature, you will have an exponential time. मतलब इस 5 फीचर के रिगार्डिंग जो डिसीजन ट्री बनाओगे उसके रिगार्डिंग तुमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। दिस इज 5 इज जस्ट एन आर्बिट्रेरी फिगर। व्हाट आई मीन टू से कि अगर तुमको थोड़ा सा ग्राफ पता होगा तो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। सो if you would increase your number of feature, so जो टाइम लगेगा उसको कंप्यूट करने के लिए डिसीजन ट्री, इट वुड वेरी एक्सपोनेंशियली, बहुत बहुत कम फीचर के बाद ही बहुत ज्यादा टाइम लगने लगेगा। सो दिस मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट। One thing I may say is this method is not at all appropriate in any sense. इससे काम नहीं चलेगा। You may not go with this. ठीक है? तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके बेसिस से हम ये डिसाइड कर पाए कि एक पर्टिकुलर फीचर एक नोड के लिए सबसे बेस्ट रहेगा? हमारा एम यही है।
what we want that on all levels of a tree, we want a very optimal feature to be placed. हम यही चाहते हैं. Am I correct, शशांक, कनिष्का, वंशिका? हम यही चाहते हैं जो सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट हो उस लेवल के लिए. लेवल इज व्हाट? लेवल इज दिस. जैसे वंशिका अभी फर्स्ट ईयर की अभी क्रॉस की है, तो लेट मी टेल यू, दिस इज रूट नोड, तो इसका लेवल है 0, इसका लेवल है 1, इसका लेवल है 2, इसका लेवल है 3. दीज आर द डिफरेंट लेवल्स. जैसे हम डेप्थ नीचे जाते जाते हैं, हम चाहते हैं कि अगर लेवल 2 पे बात करें तो दिस फीचर हैज टू बी वेरी अप्रोप्रिएट. एक और इशू ये आता है इसके कारण कि डिसीजन ट्री इज अ क्लासिक एल्गोरिथम टू लीड टू ओवरफिटिंग. व्हाट डू आई मीन? अगर तुम्हारा फीचर सिलेक्शन अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो इससे होगा ये कि तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा के साथ तो बहुत बढ़िया वर्क कर जाएगा. तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा के साथ तो बहुत बढ़िया वर्क कर जाएगा. आई कैन हैव समथिंग एज दिस. लेट मी शो यू अ ग्राफ, बिकॉज हमको ग्राफ से पढ़ाना बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत कम. इफ आई हैव a graph of error versus your number of features. So what happens is, as you increase your number of feature, you in your training data the curves fall something like this. The curves follows this path. ठीक है? होता है कि जब हम फीचर्स बढ़ाते हैं तो हमारा this is what, let me label it, this is what your training data. This is your training data. ट्रेनिंग डेटा में क्या होता है, जब हम फीचर बढ़ाते हैं तो हमारा एरर ड्रॉप करने लगता है. ठीक है? But when we talk about this test data, it follows a curve which is similar to like this. ऐसा आता है, एक जगह मिनिमम होता है, फिर ये बढ़ जाता है. This is your test data, right? तो हुआ ये कि you may see from this curve, let's say this was something as f3 or something as fk. So इससे हमको ये पता लग रहा है कि इतना was the optimal number of features जितना हमको इंक्लूड करना चाहिए, राइट? शशांक देखो ग्राफ को समझो, ग्राफ क्या कह रहा है. अगर हम ट्रेनिंग डेटा का बात करें तो एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फीचर हमारा एरर कम होने लगता है. ठीक है? बट इन टेस्ट डेटा व्हाट हैपेंस इज your error decreases to certain number of features, then अगर तुम उसके आगे number of features increase करोगे तो your error will shoot up. That is what happens. So our aim is I have to select this number of features. I have to select this number. ये जो भी amount हो, जो भी number हो. It could be 3, it could be 4, it could be 5, it could be anything. Aim is to go with this. बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो मॉडल रन करेगा वो टेस्ट डेटा पे रन करेगा ना, वैलिडेशन पे वर्क करेगा. ट्रेनिंग डेटा के साथ तो बस ट्रेन करना है, राइट? रियल वर्क में तो वो ट्रेनिंग डेटा के साथ वर्क नहीं करेगा. उसको डेटा तो मैं दूंगा, तुम लोग दोगे, राइट? यही होगा. जैसे शशांक ने एक मॉडल ट्रेन करके मेरे को दे दिया, तो अब शशांक के डेटा पे मैं इसको क्यों रन करूंगा? भाई हमको तुम मॉडल दे दियो, मैं उसको अपने डेटा पे रन करूंगा, राइट? अब ऐसा हो कि अगर शशांक के ट्रेनिंग डेटा के साथ तो बहुत अच्छे से वर्क कर गया. फॉर एग्जांपल योर ट्रेनिंग डेटा के साथ योर एरर वाज समवेयर अराउंड 5%. ठीक है? बट व्हेन आई टेस्टेड इट माय एरर वाज 55%.
क्या मैं ऐसे मॉडल को यूज करूंगा कभी? Kanishka, just tell me, will I be able to use such kind of model? What did I say? I say कि with training data I got an error of 5%, merely 5%, सिर्फ 5% का एरर आया वंशिका, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट डेटा के साथ वर्क किया, my error shoot to this 55%. तो just tell me, किसी भी केस में will I use this मॉडल? कोई यूज करना चाहेगा इसको? वंशिका, तनिष्का, सिर्फ सुशांत रिप्लाई कर रहा है, ऐसा क्यों? Yes. कोई नहीं यूज करना चाहेगा, राइट? कोई क्यों करेगा भाई? हमको इससे मतलब है जब तुम्हारा एरर ही यहाँ पे हो जा रहा है। So this kind of condition is known as overfitting. This kind of condition is known as, let's say, overfitting. What happens? Works great for training data. So this kind of condition, अगर तुम किसी बुक सब में देखोगे तो this is also known as low bias, but it works pathetic with your test data. This is a condition of high variance. This is what overfitting. Or classification decision tree is a very classical example कि जब भी तुम use करोगे decision tree, somewhere down the line you will always have this issue. You'll always have this issue of overfitting. कि तुम्हारा मॉडल तो ट्रेनिंग डेटा के साथ बहुत अच्छे से वर्क कर गया, लेकिन जैसे ही मैंने टेस्ट डेटा के साथ वर्क किया, नहीं चला अच्छे से। तो इसी को ओवरकम करने के लिए यू हैव दिस रैंडम फॉरेस्ट, यू हैव दिस अदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लाइक सपोर्ट वेक्टर मशीन, बट सिंस इट इज आल्सो वेरी क्लासिकल एल्गोरिथम, वी विल स्टडी अच्छे से इसको। सो मोर और लेस यू सॉ समथिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया हम क्या कैसे डिसाइड करेंगे कि सम फीचर इज appropriate at that level? कैसे हम पता लगाए कि I have to place transportation facility here only, not some other kind of features like this? अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको उठा के यहाँ रख देते हैं और इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, कैन वी डू इट? हम कर सकते हैं। डिसीजन ट्री में यू आर फ्री टू डू इट। कोई दूसरा डिसीजन ट्री बनता है, उसके उसके रिगार्डिंग तुम्हारा एक्यूरेसी कुछ और होता। सो देयर इज दिस मेथड which is known as attribute selection measure. You have something which is known as attribute selection measure. इसमें होता है, देखो इसमें होता ये है, तुम्हारा एम है कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये पता लगाना कि कौन सा फीचर किस नोड के लिए बेस्ट है। बस जैसे मेरे को मिल गया कि ये फीचर इस नोड के लिए बेस्ट है, मैं उसको वहां रख दूंगा एंड आई पास ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, थोड़ा समझ में आया शशांक, कनिष्का, वंशिका? गिव मी अ थम्स अप अगर आया थोड़ा थोड़ा। हमारा एम है कि एक लेवल उठाया, कुछ मैथमेटिक्स किया, कुछ फीचर को टेस्ट किया, अगर उस मॉड्यूल मेरा मैथमेटिकल मॉडल पे वो पास कर गया, मेरा वो फीचर वहां रहेगा, अब मैं उसके नीचे आ जाऊंगा, अब दूसरे फीचर को नीचे चेक करूंगा मैं। So we can have something as you have this यार, हैंडराइटिंग हो गया मेरा यार, जस्ट से। आई होप हैंडराइटिंग थोड़ा समझ में आ जाता होगा, उतना भी नहीं। इसका एम क्या होता है? टू हेल्प
जैसे बहुत क्लियर, हाँ यार जैसे तो हाथ बैठेगा वैसे वैसे। टू हेल्प सेलेक्ट द बेस्ट फीचर फॉर अ पर्टिकुलर node of the decision tree. ठीक है, there are different measures, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी इसमें कीवर्ड यूज किया गया है कि these are some measures, so there have to be some techniques regarding that. There has to be some kind of techniques. सबसे पहले देखते हैं, there is one technique which is known as entropy. There is this first technique which is known as entropy. It is denoted as something as h of s, यानी कि entropy of some feature s. ठीक है, इसका इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला इफ आई हैव टू टेल यू, इसका फॉर्मूला ये होता है minus I is equals to 1 till m pi log of pi. This is the formula. ये है क्या, अभी मैं बता रहा हूं। ये तो समझ में आ ही रहा होगा सबको कि m is your total number of data points in the data set, right? अब देखो ये होता क्या है, what this entropy is. तो एंट्रोपी, जैसे अगर तुमको बता, जैसे तुम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे, तो एंट्रोपी बताता था कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन अ एनवायरनमेंट, राइट? Kanishka, Vanshika, if you are from science stream, entropy was what? How much randomness is there in some kind of environment or some system. So same thing here. It measures the randomness. Randomness is in the data. Or you may say it measures the impurity in the data. What do I mean by impurity? If you could data. see, randomness का बात कर रहे हैं, randomness का मतलब क्या होता है? अगर डेटा सेट का बात करें तो randomness can be said as something like ये दोनों फीचर है, ये दोनों में आपस में कोरिलेटेड नहीं है, इसका कुछ और कंक्लूजन निकल रहा है, इसका कुछ और कंक्लूजन निकल रहा है। लेकिन अगर डेटा कोरिलेटेड होते तो आई कैन से कि हाँ, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। Randomness is what? Something you cannot कैसे मैं बताऊं, जैसा कोई कंक्लूजन तुम नहीं ड्रॉ कर पाओ, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं कि ये मोशन कब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कुछ रैंडम, तो इससे मैं कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकता एक्सेप्ट द फैक्ट कि इट इज रैंडम, काइंड ऑफ। समझ में आ रहा होगा व्हाट डू आई मीन? So it measures the randomness in the data and it measures the impurity. अब होता ये है कि this entropy belongs to this range 0 to 1, इस रेंज में लाई करता है एंट्रोपी। हम देखते हैं, और ये लेट मी आल्सो टेल यू व्हाट दिस pi is. So pi is the probability of it is the probability of selecting ith sample, ith class, और हाँ, क्योंकि we are dealing with randomness, तो we can say probability of randomly selecting. Pi is that probability. For example, let us take for this example. Let us say we have something as, ऐसा करते हैं कि एक और डिसीजन ट्री बनाते हैं,
और उस डिसीजन ट्री पे लेट्स सी व्हाट आई से इज लेट अस सी फॉर फर्स्ट मोमेंट कि हमको क्रिकेट खेलने जाना है, हमको खेलने जाना है बेसिकली। तो लेट अस सी कुछ कुछ फीचर्स पे हम देखते हैं। अभी ऐसे गर्मी का टाइम है, तो क्या सबसे पहले डिसाइड होता है कि क्या मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ हूँ, एम आई विथ माई फ्रेंड्स। पी आई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग द ith क्लास। जैसे दो क्लास होता है ना, अभी मैं इसको बता रहा हूँ क्या होता है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। Let me see that with friends or without friends. You have these two classes. So we can have something as I can have a yes, I can have a no. If I'm with my friend, let us check कि is there summer is, अगर गर्मी हुआ तो मैं उसके हिसाब से गेम खेलूंगा, विंटर हुआ तो विंटर के हिसाब से गेम खेलूंगा। मैं एक डिसीजन ट्री बना रहा हूँ नॉर्मल। अगर गर्मी नहीं है, अगर मैं फ्रेंड के साथ नहीं हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने पेरेंट्स लोग के साथ हूँगा। बचपन का सिनेरियो इमेजिन करो। तो अगर मैं फ्रेंड लोग के साथ नहीं हूँ तो आई सिट एंड स्टडी। यार रुको रुको रुको, इस डेटा सेट को छोड़ो, इससे इसको थोड़ा सा इजी कर दे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए। लेट अस हैव दिस डिसीजन ट्री रादर। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लेट अस से यू हैव दिस फीचर वन। अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, यू हैव दिस फीचर वन, ठीक है? You have this feature one. So this feature give rise to class one and this feature give rise to class two. यही दो फीचर होंगे। अगर मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन का बात करूं, you have this class one and class two. Let us say initially we have 9 yes and some 5 no. There were some 9 yes and some 5 no's. And let us say we have some 6 yes for class 1 and 3 no for this thing. Let us say we have 3 yes for this class and 2 no for this class. अरे क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो क्लासिफिकेशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट? या तो यस होगा या नो होगा, या यस होगा या नो होगा। तो अगर मेरे पास 7 + 5 14 डेटा सेट है तो आई हैव दिस। सो just tell me if I want to, let us see, I want to calculate the entropy of this node. I want to calculate the entropy of this node. ठीक है, शुरू करें। So just tell me what are the two different classes here. So you have this yes class and you have this no class, right? Off, right? Yes या no, right? शशांक, कनिष्का, वंशिका, तुम्हारा क्लासिफिकेशन इसी दो पे हो रहा है। या तो यस होगा या नो होगा। अगर यस होगा तो लेट अस से इट इज पॉजिटिव, नो होगा तो लेट अस से इट इज नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। Can I assume what I mean to say? चलो आई गेस वो पार्ट क्लियर हो गया तुम लोग को। नाउ लेट अस कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ रूट नोड। सो व्हाट, अच्छा ठीक है, ऐसे से लेट अस से दिस p plus is the probability
probability of randomly selecting your positive class, ठीक है। तो अगर मैं रूट नोड का बात करूं, रूट नोड में टोटल कितने क्लासेस हैं? 9 + 5 14, 9 + 5 14, आउट ऑफ 14 पॉजिटिव कितने? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 9, राइट? 9 are from positive class. So can I say the probability is 9/14? This is the probability of randomly selecting a positive class in the root node. अगर मैं root node का बात करूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे specifically in root node. अच्छा, अब आते हैं p माइनस पे। p minus, this is the probability of randomly selecting a negative class. अब आते हैं वापस से ऊपर। आउट ऑफ 14 ऑब्जर्वेशंस कितने है तुम्हारे नेगेटिव क्लास में? 5 है। शशांक, कनिष्का, जस्ट टेल मी यस और नो। 5 है। So can I say that probability is something 5/14? Can I say? Now let us calculate the entropy. So my entropy goes as something as entropy of root node. Let us say my root node is S. So by the formula क्या होता है? Summation I is equals to M. I is equals to 1 till M. Your Pi multiplied by log base 2 of Pi. So let us calculate it from here. Can I expand it to something as P positive into log base 2 of P positive minus P negative log base 2 of P negative. Can I expand it? If you have only 2 classes, can I expand it? If M is what? Your number of classes. Can I expand it? मैंने क्या किया? इसको ओपन किया फॉर नेगेटिव क्लास, पॉजिटिव क्लास, इसको ओपन किया फॉर नेगेटिव क्लास, तो आई गॉट दिस फॉर्मूला. अब now let me put the values. So what was the probability of positive? Minus multiplied by, I guess it was 9/14, right? Sashank? Minus, and it was 5/14. Log base 2 of 5/14. So if you would calculate this, this would be somewhere around down the line of 0.9. 0.9. तुम एक बार कैलकुलेट करो इसको, समवेयर अराउंड 0.9 आएगा आंसर. चेक करो शशांक एक बार, आया? एक बार इसको तुम लोग अपने साइड से कैलकुलेट करो. लेट मी assume कि 0.9 है, ठीक है. मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, जो आंसर आएगा वो लास्ट में चैट सेक्शन में बता देना, ठीक है. let me not waste my time on this calculation. So you have this 0.9. Let us do what? Let us calculate it for this. Let us say it as C1. Let us say it as C2. अब इस नोड के लिए चेक करते हैं, ठीक है. The probability, sorry,
So the entropy for this node, entropy for this C1, can I say minus what is the total probability here of selecting positive class out of C1? So 9 plus 6 plus 3, 9, 6 by 9. So the probability of selecting a positive, let me write the formula again. Probability of selecting the positive class, log base 2 of this positive class minus probability of selecting a negative class, log base 2 of this negative class. So this comes to be minus 6 by 9 log base 2 of 6 by 9 minus, it was what? 3 out of something? 3 no. 3 no. I have this. So this comes to be minus 3 by 9 log base 2 of 3 by 9. So if you calculate it, if you calculate it, you'll get a value of somewhere around 0.25. You'll get this value. Okay? Let me calculate it for the other. Minus positive class log base 2 of what? Positive class minus your negative probability log base 2 of your negative. So what I have here is out of 5, 3 by 5 is the probability of selecting your positive class and 2 by 5 is the probability of 2. Let me do it again. I can something as minus 3 by 5 log base 2 of 3 by 5 minus 2 by 5 log base 2 of 2 by 5. So if you calculate it, you'll have a value of somewhere around 0.29. Okay? You'll have a value of somewhere. I can say, अभी ठीक है 0.9 ही रख लेते हैं. H of S comes out to be 0.9. Just take it. ठीक है? So you can see एक idea मिल गया होगा यहाँ से that your value is varying between 1 and 0. जैसे मैंने बताया था इसके बीच लाई करेगा. Your value will lie somewhere down the line of 0 and 1. What happens is, let me tell you, your data, because this is what this actually help you understand how your data is. It does not tell you anything about the feature selection. It just says, tell you about how your data is. So your data is pure or it is impure. Your data could be any of this case. So it is pure if your entropy is 0 and it is impure if your entropy is 1. अगर कोई randomness नहीं है तो that is the best case for me. अगर randomness नहीं है तो I can actually correlate them to make some kind of decision. Shashank, are you getting what I'm saying? All right. If your entropy for your with respect to your root node is 0, that is the best case. That is your data is pure. And if it is 1, it is impure. So can I make a graph of something like this? Agar if I have to say a graph of, let us have
your probability pi and your entropy of h of s, can I say something? Let us take this point as 0 and let us take this. 1 minute, Sushant, 1 minute, just. So the highest value it can go is 1. So can I say my graph is somewhere down the line of something like this? वो अच्छा से नहीं बना, just a second. Can I say it is something like this? Where maximum is for 0.5. Whenever your probability is with highest feature will tend to 0.5, you will have the maximum impurity. You will have a maximum impurity. मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 50, अगर मेरे पास कोई डिसीजन है उसके लिए 50 yes और 50 no है, क्या मजाक है ये? मैं क्या डिसीजन लूं उस पे बताओ? जस्ट टेल मी कि अगर तुम्हारे पास एकदम हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है कि इट कुड बी इधर अ यस, इट कुड बी इधर अ नो, a perfect random situation, क्या होगा इसमें? You don't know what to do now, right? You don't know, you don't want this, correct? You want something like either go with a surety, give me have something as 90% yes है, 10% no है, तो for sure I know कि अगर मैं वहां पे अराइव किया तो I have to go with a yes, right? So this was your first technique. You have this another technique which is known as your Gini impurity or Gini index, sometimes they say. Let me show you. You have this next technique which is known as Gini index. ठीक है? अब ये होता क्या है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर ये समझना कि हम इसको क्यों यूज करते हैं. लाइक अब क्योंकि ये सब एक नंबर है, राइट? दीज आर ऑल सम नंबर्स, तो इससे हम कुछ इन्फेरेंस ड्रॉ करना चाहेंगे, राइट? जस्ट गिव मी अ यस और नो. अब कुछ नंबर है तो उस नंबर का कुछ सेंस बनना चाहिए ना. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कैलकुलेट सम काइंड ऑफ एवरेजेस, कुछ मीन कैलकुलेट करते हो, उसका एक सेंस बनता है ना, कुछ कंक्लूजन तुम उसे ड्रॉ करते हो ना, व्हाट दिस गिनी इंडेक्स इज अबाउट. सो व्हाट दिस सेज इज इट मेजर्स द डिग्री ऑफ impurity. It also measures the degree of impurity here. जैसे हमने एंट्रोपी में देखा कि वहां पे भी हमको एक प्योर स्प्लिट मिल रहा था, एक इम्प्योर स्प्लिट मिल रहा था, राइट? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एच, करेक्ट? प्योर स्प्लिट मिल रहा था व्हेन योर एंट्रोपी इज 0, और इम्प्योर मेरे को स्प्लिट मिल रहा था व्हेन योर एंट्रोपी वाज 1. Same here goes for Gini index. But the only thing is your Gini index belongs to this interval 0 to 0.5. It goes for this criteria only. या तो मेरा वैल्यू सबसे लोएस्ट होगा, दैट इज योर 0, और इट वुड बी मैक्सिमम, दैट इज 0.5. इसके बीच ही लाई करेगा वैल्यू. तो लेट अस सी इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज उसके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे. सो फॉर्मूला इज एज इजी एज योर गिनी इंडेक्स is equals to 1 minus summation I is equals to 1 till m pi square, and pi is what? Your probability जो ऊपर था, probability of
randomly selecting your ith class. This is the formula. This is the formula. हमारा एम होता है, our aim is choose the feature with less गिनी इंडेक्स. अगर हमको कंपैरिजन करना हो किस फीचर को रखें किस फीचर को नहीं रखें, तो यू हैव टू सेलेक्ट अ फीचर जिसका गिनी इंडेक्स कम हो. आइडियल केस है इट इज 0. आइडियल केस है इट इज 0. अगर दो दो तीन है तुम्हारे पास तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर समवन जिसका सबसे कम गिनी इंडेक्स. लेट अस डू इट. One more thing, let me show you. It is something as if your Gini index, your data can be a pure split or it can be an impure split. If your Gini index is 0, if your Gini index is 0.5. ठीक है. तो हम जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा, लेट अस सॉल्व इट फॉर दैट एग्जांपल ओनली. उसी के लिए गिनी इंडेक्स निकालते हैं. ठीक है. Let me show you that chart once again. You can have something as you let us say you have this feature 1. This give rise to your class decision C2. Let us say for this example you have 9 positive and 5 negative. For this, let us say you have 6 positive, 3 negative. Let us say you have 3 positive, 2 negative. Two negative means you have 3 yes, 2 no. You have 6 yes, 6 no, 3 no. That is what I mean. For this decision tree, let us calculate the Gini index. So Gini index is written as your gain of, let's say, source S of feature F1. It is given as 1 minus summation of I is equals to 1 till m pi square. Pi square. ठीक है. If I have to expand this, I can write it as 1 minus P of positive, any probability of selecting a positive class square, plus P of negative, something like this. ठीक है. Let us see if I'm talking about source. If I'm talking about source, let us see what is the probability of selecting a positive class. So it goes as 9 by 9 plus 5, that is 9 by 14, right? Right? Just tell me. Your negative is 5 by 9 plus 5, that is 5 by 14. आया? Shrinjay, Okay, एक मिनट. This is not known as gain. Sorry. My mistake. This is your Gini index, and this is given by 1 minus I is equals to 1 till m pi square. ये फॉर्मूला था. हाँ सुशांक बोलो. अरे वो यही बोल रहा था, और नेटवर्क चला गया था तो आगे कोई बढ़ बात गया था कहीं. कोई बात नहीं. Let us calculate. So it goes as 1 minus 9 by 14 square plus 5 by 14
square. Let me switch off this. So can you tell me what is the answer you guys get? You guys got? Let me do it here only. Let me actually solve it. 9 divided by 14 squared. 9 divided by 14 square plus 5 divided by 14 minus 1. So this comes out to be 0.459. This is your Gini index. So you can see this is very close to 0.5. This is very close to 0.5, right? Right? So if I have to plot a chart, let me plot a chart here. Oh, my bad. Can I have an X and Y axis? If I have to plot a chart, see what happens. You have somewhere down the line 1 here. You have your PI here. So somewhere down the line, this is your 0.5, and this comes out to be 1. This comes out to be 0. This is your 0.5. So if I have to plot a chart between Gini index and your entropy, it goes out to something like this. उतना अच्छा से नहीं बना है. अच्छा रुको, let me erase this 0.5. Something like this. ठीक है? So this is your entropy. 1 तक vary करता है, right? This is your 1 by 2. Let us calculate your Gini index. So the Gini index would go to this point, something like this. This is your Gini index. Okay? This was your scale. So I can see for half the probability, my Gini index as well as my entropy is close to its maximum. यानी कि I don't want a probability of 1 by 2 for my binary classifications. More or less ये दोनों चार्ट का शेप एक ही तरह है. मैंने बस इसको गलत ड्रॉ किया है. मैंने बस इसको गलत ड्रॉ किया है. मतलब थोड़ा सा ऐसे कर्व होना चाहिए था. बट मोर लेस आई अज्यूम कि समझ में आ रहा होगा कि whenever your probability is half, you will have the maximum value of impure split. Whenever your probability is half, you will have the maximum value of impure split, be it Gini index or be it your entropy. So now the question arises कि भैया हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा यूज करना है. तो क्वेश्चन पूछ सकते दोनों से more or less you are getting the same thing. See, the nature of the graph is very same. हाँ, बस ये थोड़ा ज्यादा वैल्यू ऊपर गया और गिनी इंडेक्स का 0.5 ही तक गया. So now the natural question arises कि भैया हम कैसे जाने कि हमें क्या यूज करना है. You may ask, you may obviously ask me, कैसे जाने. तो अब जरा इसका आंसर इस फॉर्मूले में ही है. If you have to choose between a lot of data, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा क्लासिफिकेशंस है,
तो मेरे लिए बताओ क्या कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है, ये प्रोडक्ट या सीधे ये प्रोडक्ट? शुड आई गो विद ये प्रोडक्ट मेरे लिए कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है या ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना ज्यादा इजी है मेरे लिए? शशांक, नीचे वाला। नीचे वाला है ना? ऑब्वियसली, प्रिटी ऑब्वियस, चांसेस कम रहेगा मेरे पास एरर का. सो यस, एग्जैक्टली सेम इंट्यूशन. We have the same intuition. If data set is large, go with Gini index. No issue. But if it is small, you may choose any. You may choose any. That is something तुम्हारे. So I assume कि ये दोनों पैरामीटर समझ में आ गया होगा. आया सबको? Now let us see what is the most important criteria, what is the most important technique on which we'll split the data set. This is known as information gain. This is by far the most important factor on which we'll split the data set on features. So it simply says it gives information, it gives the information कि actually एक particular feature कितना information provide कर रहा है regarding a class. Let's say you have a feature F1, तो इससे कितना मेरे को आइडिया मिल रहा है रिगार्डिंग योर पॉजिटिव क्लास और योर नेगेटिव क्लास. gives a degree of, gives the measure of information which a feature ठीक है. हमें इससे ये पता लगता है कि एक फीचर से हमें एक पर्टिकुलर क्लास दैट इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बारे में पता लगता है कि वो कितना उसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रहा है. ठीक है. और वी कैन, अगर तुमको बहुत ज्यादा मैथमेटिकली इफ यू हैव टू टॉक अबाउट, इट जस्ट गिव यू आइडिया कि हाउ योर एंट्रोपी इज चेंजिंग व्हेनेवर यू आर स्प्लिटिंग योर डेटा सेट बेस्ड ऑन समथिंग. You may say how the entropy changes on splitting the data set based on some feature. हम चाहते हैं कि जब हम कोई फीचर के रिगार्डिंग स्प्लिट करें, आई वांट माय एंट्रोपी टू बी मिनिमम, राइट? वी वांट दैट. वो वही चाहिए. So this information gain gives you that if you choose this attribute, इससे कितना एंट्रोपी चेंज होगा अगर तुम किसी दूसरे के साथ गए. If you choose some other attribute, उसके साथ कितना चेंज हो रहा है. So what you have to do, you have to always maximize this. Your aim should be select the feature with maximum information gain. This is your ultimate goal. Let us see इसका फॉर्मूला क्या होता है. इसका फॉर्मूला होता है
its formula goes to something as, let us say you want to calculate, my bad, your gain for some source S of some feature Fi. So this is the entropy of the source minus your summation of SV over S of this SV, where V are all your values. This is what it says. मैं बताता हूँ अभी क्या कौन सा टर्म क्या है. Just wait a minute. Essentially what is actually happening is, if I could tell you, what you are doing here is, let me show, this is your weighted average. This is your weighted average. And these are the entropy of a particular feature. Entropy of feature. Let us actually use it on the same example जो हमने use किया. We had this feature F1. इस feature के साथ there were 9 positive, 5 negative. स्क्रॉल अप कर दो, थोड़ा स्क्रॉल अप कर दो. This is the formula. अरे मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा. ये मिस भी हो गया है ना, कोई बात नहीं. अभी मैं नीचे आगे फॉर्मूला लिखूंगा फिर से, कोई बात. You have this. Let us say for this you have 6 positive, 3 negative. You have 3 positive, 2 negative. If this is your decision tree, for the moment, let us say. So, as you have seen, मैंने सोर्स का गिनी इंडेक्स निकाला था. मैंने सोर्स का गिनी इंडेक्स, सॉरी, ये निकाला था. This comes down to be 0.9. The entropy of your source was 0.9. आया था? Just see here. आया था ना? Your entropy of C1 was 0.25 and your entropy of C2 was 0.29. We'll use it here. देखो कैसे होता है, क्या चीजें हो रही है. So your gain of this S of this feature F1, this can be written as your entropy of source. That is your entropy of source minus summation of all the values which you have. SV over S, you may take a mod, and we have to calculate the entropy of this particular attribute SV. So if I use it here, just see हो क्या रहा है. What was the value of SV, H of S? So this was 0.9, right? This was 0.9. Now let's see what we have. We have to calculate the average. So let us take it for positive class. My SV is now positive. So if I go here down the line, you may see for your positive class you have this 9, and for your negative class you have this. So this factor comes out to be 9 by 9 plus 5. That is right. SV over S. Let us put it here. And let us have if you get a yes,
you go by this lane, and if you get a no, you go by this lane to these features. So if I take a yes, what is the entropy of C1? So the entropy of C1 was, what was the entropy of C1? 0.25. Okay. Let us calculate it with this entropy. This was 0.25. Now let us go for some other negative class. So the weighted average of negative class is 5 by 14. This comes out to be 5 by 14 into, what was the entropy of your C2? If I could see here, your entropy was 0.29. I'll use it here. 0.29. So if you calculate it, you'll have a value of 0.883. This is your gain. A very high value, 0.8, very close to 1. ठीक है? ठीक है? ठीक है? संजय, हाँ, तुमने HSV की जगह पे कौन कौन सी दो वैल्यूज डाल दिया? देखो 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 देखो, वो क्या रहा है? दिस इज योर फीचर, इसका हम गेन निकाल रहे हैं. So your weighted average for your V, let us take your V is positive. So for positive class, you have 9 over 9 plus 15, 9 plus 5, that comes out to be 9 by 14. And whenever it is positive, it is going to C1. So the entropy of C1 is 0.25 and your weighted average is 9 by 14. तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी इतना में. फिर मैं यहाँ आया. You have this negative class also. So I have calculated the weighted average for negative class, that comes out to be 5. वो भी लिखना ही पड़ेगा. Your positive, your SV minus over S, so this comes out to be 5 over 9 plus 5, that is 5 by 14. So I've used this value here. And अगर वो C2 पे जा रहा है, तो entropy of C2 is 0.9. Let us say कि अच्छा ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे अगर ट्री बनाए, ऐसे अगर हम ट्री बनाते कुछ ऐसे ही. चलो, let us say कि this was your node, this was your starting node. हम चाहते हैं ये नोड हो, C1 नोड हो हमारा. ठीक है, इसके लिए गेन चेक करते हैं. So इसका gain was h of C1 minus SV over S, h of SV, and you take the sum for all the values, right? H of C was 0.25 and this value is 0 because इसमें कोई branching नहीं है अभी कोई branching नहीं है. So your entropy is 0 for that case. This factor is 0. ठीक है? So you may see the gain is 0.25 और यहाँ पे 0.883 है. Which one is better to put it at this node source? Which is better? Obviously F1. Obviously this feature. Vanishka, are you getting what I'm saying? कि ये feature, हाँ हाँ कनिष्का. Kanishka, any query?
यहाँ पे हमारा गेन क्या है? 0.25 h of c1 हो गया, ये फैक्टर तो 0 हो गया ना, या ओनली दिस कम्स आउट टू बी 0.25. सो नाउ मैंने तो मतलब गेन हमारा एज अ टर्म मतलब क्या निकल रहा है? हाँ, मैंने ये बोला कि एक काम करो, इस F1 के इसको हटा के अगर मैं ये चूज करूं, अगर मैं ये फीचर चूज करूं, तो व्हाट इज द गेन? सो अगर मैं ऐसा करूंगा तो माय गेन इज 0.25. मैंने, अगर तुमको याद होगा, मैंने यहाँ पे ये बताया है, select the feature with the maximum gain. So by default 0.883 is a way higher value than 0.25. अगर तुम सेम अगर गेन C2 के लिए निकालोगे, gain of C2, so this comes out to be 0.29. So for both of the cases, the higher value is this value. So this is what information gain is. आया सबको समझ में ये चीज? कनिष्का, वंशिका? So this gain is by far the most important factor on which we decide whether I have to keep this feature at a particular level or not. ठीक है? ठीक है? Okay. So this was about your attribute selection measure. जहाँ पे हमने 3 methods check की, information gain, your entropy, and your Gini index. We have used 3 different factors. More or less इसी चीज में हम अपना क्लासिफिकेशन, हमारा ये डिसीजन ट्री हम बना लेंगे. ठीक है? एक्चुअली होता ही है, देखो डिसीजन ट्री का अगर हमको तुमको बताना पड़े, लेट मी एक्चुअली use this, how a decision tree works. Let me actually make it big. ये विजिबल अभी भी नहीं हुआ, make it big. नहीं हुआ. To see how a decision tree algorithm works, what happens is you have to begin with some kind of root which contains your entire data set. Let me actually try to make it big. I think this is pretty much visible. To see how does it works actually. So very first step is you have to begin with a root node, because हर एक decision tree में एक root node होगा which contains the entire data set. Now then comes, you have to select the best feature using attribute selection measure. You have to use information gain, you have to use that Gini index or your entropy to choose the best feature. So if you get that values, now you have to divide it into multiple subsets. You have to start splitting it on that basis. Once you do it, you will have a decision tree node which will contain the best attribute. ऐसे split होते जाएगा best attribute के along. So what happens is this process will happen multiple times. Same, this process will happen multiple time for different level. अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले तुम रूट नोड से स्टार्ट किए, फिर एक लेवल नीचे आए, फिर एक और लेवल सेम लेवल पे आए, फिर अब तुम इसके नीचे और चेक किए, फिर इसके नीचे एक और चेक किए, उसके नीचे एक और चेक किए. इस तरह से तुम्हारा दिस इज अ रिकर्सिव प्रोसेस. रिकर्सिव मीन्स इट इज कॉलिंग इट, ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है. So you will continue it
until you will reach it to some final node, which will known as your leaf node, and that leaf node, let us say this is your leaf node, this will actually make the decision. जैसे अगर तुमको याद है, मैंने ये वाला जो पहला जो हमारा डिसीजन ट्री था वो बनाया था, तो आई वाज यूजिंग दिस सेम मेथड. पहले हमने कुछ डेटा सेट लिया, इसमें से एक फीचर निकाला, उस फीचर के बाद हमने फिर से स्प्लिट किया डेटा सेट को, फिर हमने एक और फीचर निकाला, उसके बाद फिर स्प्लिट किया, और हमको लास्ट में वी हैव रीच टू दिस लेवल जहां पे आई हैव अ reject option or to accept option. I have these two classes, either to accept it or a reject it. So we'll use the same algorithm. So I assume this part was pretty much clear. Clear हुआ ये इतना चीज? So इस एल्गोरिथम का देखो, हम ये एल्गोरिथम यूज कब करते हैं, जब हमको थोड़ा सा काम चोरी करना होता है. जब हमको डेटा, जैसे हमको जब डेटा मिलता है, हम डेटा साफ सफाई करते हैं, डेटा क्लीन करते हैं, डेटा से मिसिंग वैल्यू हैंडल करते हैं, डेटा में एम्प्टी वैल्यूज हैंडल करते हैं, समथिंग लाइक. So if we don't want to do much of data cleaning, हमको data cleaning बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो then I go for this algorithm. Otherwise इससे भी अच्छे algorithm है हमारे पास. जो सबसे important factor है, it replicates a human decision process. हम जैसे decision लेते हैं, एक human कैसे decision लेता है, cost factor पे, अच्छा ये करेंगे तो इससे क्या benefit है, क्या loss है, अच्छा फिर अगर ये benefit करेंगे, ये बेनिफिट हमने लिया, फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें क्या बेनिफिट और क्या लॉस है, ऐसे हम जज करते हैं ना कोई भी डिसीजन लेने के पहले. जैसे हम एक रियल लाइफ में अपना डिसीजन लेते हैं, दिस डिसीजन ट्री इज समहाउ रेप्लिकेटिंग दैट प्रोसेस. ठीक है. सो दिस वाज व्हाट डिसीजन ट्री वाज. लेट अस एक्चुअली लर्न अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन. लेट मी शो यू screen if it is possible. Is it visible? Just tell me. Is it visible? Kindly open your collab notebook in which you have this data set salaries.csv. If you have imported it, give me a thumbs up. If you have uploaded that data set there, give me a thumbs up. So Vanshika says yes. Kanishka, Sashank, kindly do it fast so that we can start with implementation. Sashank, Kanishka हो गया? एक हाँ. डाउट था. हाँ बोलो बोलो बोलो. ये पूछे, तुमने एक केस बताया था जब 50-50% डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उस केस में हम लोग कैसे जज करते हैं, गिन्नी इंडेक्स को यूज करके? इंफॉर्मेशन गेन. और इनकेस नहीं भी होता है ना शशांक, नहीं भी होता है ना, तो वही सब कारण बनता है तुम्हारा ओवरफिटिंग का. तुम डिसीजन ट्री से ओवरफिटिंग को नहीं हटा सकते हो. इट इज वेरी डिफिकल्ट. समझे? इट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेथड, दिस एल्गोरिथम. You have this algorithm CART. इसके बारे में पढ़ना. CART. ठीक है, इसके बारे में तुम थोड़ा सा पढ़ना अपने से. CART, कार्ट एल्गोरिथम. ठीक है, इसके बारे में तुम लोग थोड़ा सा पढ़ना. बिकॉज जो हम ट्री बनाते हैं, जो हमने ट्री बनाया, ये जो मैंने एल्गोरिथम तुमको बताया था, दैट वाज द कार्ट एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम. Classification and regression tree algorithm. Okay, perfect. So let us actually head on to the implementation part. Let me open my implementation. Just tell me if it is visible. Yes, it is. So the very first step is, let us import our data set. So for that, I'll need pandas. Once I have this, let me move back to the next. Let me have df pd.read csv.
Of this data set, let me actually add the address, relative path, copy path, pass the path here. Let us read this. So I have not imported this. Now let me run. Now your data set is ready. Let us see what is it in our data set. So your data set is, okay, you have some company, you have a job profile, you have a degree, and based on these three factors, you have to classify whether the salary would be more than $100,000 rupees, whatever you may say. It is 0 if it is not, if it is 1 if it is, yes. Pretty safe to assume. Right? Now just tell me, out of all these 4 attributes, what are the attributes which I wanted in my input feature? किन किन फैक्टर से हम डिसाइड कर रहे होंगे कि हमारा इनपुट क्या होगा? कैन आई से इट वुड बी दिस कंपनी? किस कंपनी में हो तुम? पहली चीज, let us see what all data set. This is your entire data set. You have this ABC Pharma, you have this Google, you have this Facebook. These are the different job profile. These are the different degree. So can I say job, company, and degree? These three are my input factors, input features. Can I say Kanishka, Vanshika, Sashank? इन तीनों के basis पे this is my target classification. This is my target classification. So to actually change our, हम लोग यहाँ पे data pre-processing कर रहे हैं जहाँ पे हमको सिर्फ ये 3 features से काम है. I can have input is equals to df dot drop, and let me actually drop this feature, salary more than 100K. Let me actually have this feature drop from our data frame along the axis of my column. Let me run this. Let us see what is it in our data set, data frame. You may see you have this 3 columns. हमने ये part हटा दिया. हमने ये part हटा. Now what should be my target? So my target would be df of your salary more than 1000K. This all value I want. This 0 and 1. Let me have this target dot head. Let us see what is it our data set. Yes, we have something like this. Okay. Now actually do what? Let us label it. Let us label it. So if you go to this sklearn label encoder, you have this label encoder. I'll show you here. See, why do we use it? It encoded the target labels between 0 and n-1 class. So how do we use it? We have to import this line, import label encoder. Here. From sklearn, we have imported this factor. Okay? Just a second, just a second.
उधर से लेफ्ट से सॉरी गाइस थोड़ा सा घर का now what we have to do we would be label encoding them so we can have our first feature let us say your company can have your company I'll use this label encoder function अगर तुम यहाँ देखोगे you have this label encoder see actually this is one nice method to actually learn from documentation देखो हो क्या रहा है this transformation should be used to encode target values that is y not the input x ठीक है I'll use this I'll simply use it label encode this and let us do it for all three values for job or degrees because these three are your input features let me actually share this with you in the chat section okay. Now we have label encoded our feature if you want to see something let's see a company see this you have already label encoded it now let's do what let us fit our values on this so I may say something like your inputs as your company what this is your company right this is your company and let us do it for nth value so we'll use this function which is called a transform function here see इसने देखो क्या किया है इसने ये वैल्यू उठाया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यूज हैं which are not your text but see इसको भी इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया you have this different attributes you may work it like fit to label it fit label encoder fit transform y and to actually fit it and actually return you the value and you have all these different देखेंगे कहाँ हमको इसको क्या यूज करना है but let us put here so we use as equal to let us say we have this we use that transform okay let's I want to get the values now I want to use this fit transform I'll use this fit transform I'll use this fit transform and what do I want in my like if you could see here in this fit transform I want some kind of parameters of target values so if I'm talking about company my target value is company itself my target value is input this company I'll do it for all the three attributes I'll do it for job I'll do it for degree run it inputs is not defined let's see. Something like let us see what this input contains now let us see what this input contains now so what it did was इसने अब इसको ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर चुका है कुछ
कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज में जिस पे हम जज करेंगे अब, ठीक है. This is what we have got. Now if you see this thing, I don't want this degree n. Am I correct? I mean, let us say input, you have already, let's do this. Input dash n is equals to df dot drop, and out of this I want to drop your company, your job, your degree. Let us drop them. मैं क्यों कर रहा हूं मैं बता रहा हूं. I want to drop this company. Oops. I want to drop this company. I want to drop job. I want to drop my this feature degree. See if I put here, and I want it along my columns. Axis goes as your columns. Run this. Let us see how your data frame look like. So it looks something like this. आया सबका शशांक? आया? If आया तो give me a thumbs up. आ गया होगा, pretty obvious है हम. And let us see how it is different from your target. Let me print it actually. Print input n, and so let's see. Okay, this is how it looks now. Control MB. Let me print your target. The target looks something like this. Okay, this have the attribute salary is more than 1,000. Now let us head back here and let us see, do we have some kind of tree? Some kind of tree here. Yes, we have this tree. Open it. So in this tree, you have 4 different options to use it. You have this decision tree classifier. Whenever you want to use decision tree to classify something, you may use it. You have this decision tree regression. जैसे मैंने बोला, decision tree can also be used for regression purpose, but we'll use this only, decision tree classifier. How do we use it? We have something as sklearn.import decision tree classifier. I'll use it here. श्रिंजय जरा इसके ऊपर वाला कोड भेज दो जरा. मैं भेज दे रहा हूं, एक मिनट. ये वाला n equals to df drop वाला. हाँ ये वाला. तो हमने यहाँ पे देखा, if you have to use this decision tree, what you have to do, you have to pass, you have to get this from sklearn.tree, import decision tree classifier, and some model. You will use this function. Okay, I have used the same way here. I import kiya, let us have this model, and I'll use it. So now head back and actually fit our data. Let us actually fit this
target and your input. So what I'll say, model, because if you could see here, if you will go to this question, have something as fit. ये क्या हुआ इसको? Control F, fit. You have this fit. It builds a decision tree for training set. X would be your array of space, shape, the training input samples, and Y are your target values. I'll use it. Model.fit, and I want it to train on, I want it to be trained on my input underscore n, and I want map it to this target. So now your decision tree is ready. Now your decision tree is actually ready. So how do we understand कि what is the accuracy of this? इसका accuracy कितना है? That is also, I guess, it is somewhere important to know कि भाई तुमने जो decision tree बनाया है कितना accurate है? Tell me about the accuracy. हमको और सब चीजें में बात नहीं करना. I want to know what is the accuracy of this decision tree. So if you go here, can we find something as Control F? Can we find something as your score? Yes, you have this. Score. It returns the mean accuracy. So let us use it. Let us use this. Let us say what is my model dot score, and if I put this one, the mean accuracy is 1. Pretty high. Pretty high. So I assume फिर अब आप देखो अब जो यहाँ पे requirement रहता है हमारा, we can actually बस one this control and F away. इसी में तुमको जो requirement है यहाँ मिल जाएगा. Like go ahead. You can use all these different hyperparameters like max, depth, min, depth, different features, your random state, and all these things. You may use it. Okay? Like see, there's a criterion. You may use Gini index, your entropy, or your log loss. You can have this splitter. तुम best तरीके से split करना चाहते हो, or do you want some kind of randomness? Max depth, it just says कि तुम what should be the maximum depth of the tree. अगर तुम वो maximum depth तक आ गए, then जो भी उसके बाद के feature होगा, it will drop it out. ठीक है? You have this min sample split, because what it will do, it will simply split it in the minimum number of samples. So these are all different kind of hyperparameters. You may actually work on them. जैसे तुम्हारा requirement. Let me actually help you out with one more important topic of this decision tree, that is known as your pruning. Your pruning. Let us see, do we have anything for pruning here? Pruning. Yes, we have this for pruning. चल कोई बात नहीं, कोई बात. Let us actually see what this pruning is all about. Let me actually open my OneNote and help you out with what this pruning is. I guess इतना आया सबको समझ में जो मैंने बताया. वंशिका, शशांक, कनिष्का, ट्राई किया. One thing I want you to do it as the homework. I want you all, कहाँ गया ये tree? You may actually use this plot tree to build your decision tree. For example, let me use this example only.
if I'll use it, let me actually help you out with whatever we have done. Let me import it. Let us see if it works. Now, three. So let me use it for this example. I'll help, and I'll give you that as the homework. So I have this load iris dataset. Okay. Now let's do what? Let us build a model to actually see how we can actually plot a decision tree. Because अभी तक हमने सिर्फ देखा कि decision tree बना है, लेकिन अब वो decision tree कैसा लगता है? I also want to see that. So let me actually help you out with that. So we have the CLF name, and we'll pass on the function, and we'll load the data set here. No issues as of now, I assume. No issues. Let us see the plotting. Just a second. This. What happened? Let me fix it out. Okay. Done this. Now actually let us plot it. This is how your decision tree looks like. This is how your decision tree looks like. Something like this. You have your root index, root node. It has split it on this sample value. And then again, something like this. If you want to see the features, I can show you the features. Control MB. You can have iris dot data. You can actually see these are your different datas. You want to see your inputs. This. Oh, you may actually see the target. What is the target? These are your different target. If you want to see the names, target underscore names. You will see for what all data you have these three classes: Setosa, Versicolor, Virginica. So this is how you actually plot a decision tree. इसने देखो हर एक के लिए गिनी वैल्यू निकाला है, सैंपल निकाला है, सेट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर्स चूज किया है. ठीक है. So you may actually use that plot function, plot tree, to build a decision tree for the above example. Till then, let me actually do what? Let me actually help you out with learning what this pruning is. Just a second. Let me open my OneNote. Okay. Let us see what this pruning is all about. इतना clear हुआ? Vanshika, Kanishka, Shashank. Perfect. Now let us understand the last topic for today's discussion. What this pruning is. So I can say it is a bandage to the overfitting issue. जो हमारा ओवरफिटिंग इशू होता है क्लासिफिकेशन एज अ डिसीजन ट्री में, it helps you out with that. It helps you out with that. Now you may ask me how.
संजय भैया, टेल मी हाउ वी कैन एक्चुअली improve the overfitting issue. तो तुमने देखा कि there was some kind of randomness in the data. कुछ sort of randomness था. The best way is your randomness is 0, and the worst case is your randomness is 1. Clear है? कोई बात नहीं कनिष्का, कोई बात. अंशिका, देखा तुमने? The worst case was the randomness was exactly 1, and the ideal case was the randomness is 0. तो कभी कभी क्या होता है, let us have our x. Let me actually erase it. Let me have this automatic shape. कभी कभी क्या होता है कि if you have this x, if you have this feature 1, feature 2, feature 3, feature 4, and you have this output as a yes or a no. Let us have this. कभी कभी देखो होता है क्या है, जैसे मैंने तुमको क्लासिफिकेशन फीचर स्केलिंग में बताया कि हर जो फीचर है वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करता है टू गेट द आउटपुट, राइट? हर फीचर से हमें इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, समझे शशांक, वंशिका? तो आवर एम इज, अगर हमको लेट से इस फीचर के कारण उतना हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं, नो पावर ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर हम इस फीचर के कारण कुछ सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आई सिंपली ड्रॉप इट, मैं इसको हटा दूंगा. अब मेरा बताओ तो, अगर मेरा इनिशियली फीचर का सेट वाज समथिंग लाइक, इट वाज समथिंग लाइक f1, f2, f3, f4, समथिंग लाइक दिस. तो अब अगर मेरा न्यू फीचर का सेट क्या हो जाएगा? इट वाज बी f1, f2, f4. आया? तो तुमने क्या किया? साइज को रिड्यूस कर दिया, साइज रिडक्शन किया है तुम्हारा. हमने देखा था कि अगर हमारा साइज कम हो, नंबर ऑफ फीचर्स कम हो, सॉरी, अगर नंबर ऑफ फीचर कम हो तो आई कैन परफॉर्म ग्रेट इफ दिस वाज माय नंबर ऑफ फीचर and this was your time taken to classify. If my feature is less, it is a better option for me to classify in less time. अब मैंने वही फीचर को हटाया जिससे मैं कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है. देखो मैंने ये टर्म यूज किया है, हम हर एक फीचर को नहीं हटा सकते जिससे हमारा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा हो. So can I say something like this? How we gonna do it? We're gonna do it in something as we'll reduce the size of the tree by removing the features with very small or very less, let me write, very less power in classifying. हम क्या करेंगे? For example, something like this, let me tell you. Let us say our decision tree was something like F5, F6, F7. If we have something like this, अगर ये मेरा डिसीजन ट्री है अभी के लिए मान लो, एंड और मेरे को ये दिख रहा है कि दिस F3 फीचर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इससे मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज हो सकता है हमको कुछ ऐसा आउटपुट मिले 50 yes 50 no.
समथिंग लाइक दिस, समझे? हाँ, अगर हमको ऐसा कुछ मिला तो फिर इस फीचर का क्या फायदा जब आधा डेटा सेट इक्वली डिवाइड हो जा रहा है? फीचर का मतलब क्या है? कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करे. So if that is the case, you may see कि I may actually drop this. So मेरा डिसीजन ट्री कुछ इस तरह से हो सकता है, F5, F6, and I can use this over here only, F4, F5, something like this. So अब मेरा डिसीजन ट्री देखो पहले से ज्यादा सिंपल हो गया, पहले से ज्यादा मेरा सिंपल हो गया डिसीजन ट्री मेरा. कम ब्रांचिंग है, राइट? कम ब्रांचिंग है. So this is what pruning means. Pruning is essentially that you actually reduce the size of tree. That is what you do simply. And how do you do it? You simply remove some features. Ab see, there are two types of pruning. There are two types of pruning. ये बस एक last topic, इसके बाद we'll finish for today's session. There are two types of pruning. अगर तुम मेरे को ऐसे सोचो, अगर मेरे को ट्री से एक फीचर हटाना है तो एक तरीका है कि जब मैं ट्री बना रहा हूँ उसी टाइम में वो फीचर को ड्रॉप कर दूं, राइट? अगर मैं जब ट्री इनिशियली बना रहा हूँ तभी मैं फीचर को ड्रॉप कर दूं, दिस इज नोन एज प्री प्रूनिंग. एक तरीका है कि जब मैं ट्री बना रहा हूँ उसी टाइम कर दूं, और एक तरीका है ये, जब मैं ट्री बनाया फिर मैं देखा कि किसके कारण ज्यादा क्लासिफाई मैं नहीं कर पा रहा हूं और फिर उसको मैं हटा दिया. यानी कि मैं देखो इनिशियली मैंने ट्री बना रखा है, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो दिस इज नोन एज पोस्ट प्रूनिंग. दिस इज व्हाट हैपेंस. प्री प्रूनिंग में देखो क्या हुआ, इसमें होता ही है कि तुम कुछ हाइपर पैरामीटर्स देते हो, हाइपर पैरामीटर्स लाइक maximum depth, something like this, or your maximum feature, maximum number of feature. इस तरह से कुछ तुम क्राइटेरिया दे देते हो. अब इससे होता क्या है, जब हम क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो विल फाइंड आउट कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर दैट कंडीशन. लेट्स से कि माय मैक्स डेप्थ शुड बी 3 and your max number of features should be 2 or something like 4. Let us say 4. So I can have a tree. संजय, क्राइटेरिया इनिशियली दिया जाएगा ना? हाँ, इनिशियली जैसे तुम, अगर तुमको याद हो, let me show you this screen actually. Just tell me if it is visible or not. Visible है? Let me show you this. If I'll show you this, your tree classifier, if you see here, यहाँ पे देखो ये सब तुम पहले डिसाइड करके दोगे. मैंने अपने एग्जांपल में नहीं दिया, लेकिन तुम यहाँ ये पुट कर सकते हो. व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ यू वांट, व्हाट इज द मिनिमम सैंपल स्प्लिट यू वांट. ये सब अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स है, राइट? तुम इसको यूज कर सकते हो इनिशियली बताने के लिए. ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये सब दिया हुआ है. यू कैन एक्चुअली पुट दैट. तो होगा क्या, तुमने जितना दिया रखा है उसी हिसाब से फीचर्स बनेंगे. यू हैव देखो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो तेरा टोटल 3 लेवल्स. ठीक है. नंबर ऑफ फीचर यू वांटेड टू बी 4. यू हैव योर 4. मैंने इनिशियली डिसाइड कर लिया कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से मेरा ट्री बना. ठीक है. दिस वाज ऑल अबाउट योर प्री प्रूनिंग, जहां पे तुम क्या करते हो, ट्री को स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर देते हो कि तुमको कितना लेंदी रखना है. बिकॉज देखो होगा ये कि जितना तुम लेंदी रखोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारा कंप्यूटेशन लगेगा उस ट्री में, और चांसेस आर कि उतना ज्यादा ओवरफिटिंग इशू होगा. ठीक है. अब तुम देखो पोस्ट प्रूनिंग में क्या करते हो. पोस्ट प्रूनिंग में तुम क्या करते हो,
कि यू सिंपली दोनों में बस इसमें बस हाइपर पैरामीटर लैक करता है। अगर मेरे को बस एक लाइन में अगर एग्जाम लिखना हो तो मैं एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ। You have your first criteria, बस we'll wind up today's session, already बहुत ज़्यादा हो गया। Pre-pruning. What you actually do, you stops the tree from growing. Okay, let me, एक मिनट, मैं इंक थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, स्क्रीन पे ही अच्छे से विजिबल। So what your pre-pruning, your pre-pruning is, तुम क्या करते हो, that you stops the tree from growing, stop the tree from growing initially. Let me highlight this keyword. Initially, once you meet the certain criteria for hyperparameters. ठीक है, जैसे तुमको क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए तुम अपना ट्री रोक सकते हो। And let me talk about this post pruning. Post pruning, what happens in post pruning is you simply remove the unnecessary branch which do not provide significant classifying power. अब कहां से रिमूव करते हो? From a fully grown tree. From a fully grown tree. क्लियर है वंशिका शशांक? क्लियर है इतना? शशांक क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप अगर क्लियर हो। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो मेरे से। ये लास्ट वाला पोस्ट प्रूनिंग बता दो थोड़ा। अरे मैं क्या बोल, मेरे को मेरा एकदम क्लियर सेंस है। मैंने तुमको अभी जो एग्जांपल दिया कि यू हैव दिस F1 फीचर, F2, F3, F4, F5, something like this. You have a decision tree like this. तुमको पता है कि ये फीचर के कारण कुछ तुम ज्यादा क्लासिफाई करने में हेल्प नहीं कर पा रहे हो, इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, तो तुमने बोला कि संजय एक काम कर दो, इसको यहां से हटा ही दो, इसको यहां से हटा ही दो। सो आई कैन लेट मी मेक द इंक बिट बोल्ड। तुमने बोला कि एक काम करो संजय, इसको हटा ही दो। F1, F2, F3 एंड योर F4, ये रहा तुम्हारा फाइनल डिसीजन। ठीक है, तुमने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा ब्रांच थी इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे तुमने इसको रिमूव कर दिया। इस ब्रांच का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, मैंने अज्यूम किया, ठीक है, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तुम इसका गिनी इंडेक्स दे सकते हो, इसका इंफॉर्मेशन गेन दे सकते हो, उससे मिल जाएगा आइडिया इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं क्यों अपने ट्री को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करूं? बिकॉज मैं जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करूंगा उतना ज्यादा मेरा ओवरफिटिंग का इश्यू होगा। सिंपल, जितना कम फीचर के साथ मैं क्लासिफाई कर सकता हूं उतना ज्यादा अच्छा है। तो दिस इज नोन एज योर पोस्ट
This is known as your post pruning. और देखो तुमने ऑलरेडी एक बना बनाए फुली ग्रोन ट्री को यूज किया ना, इसलिए मैंने ये कीवर्ड यहाँ यूज किया, फ्रॉम अ फुली ग्रोन ट्री। और हम क्या करते हैं इसमें, अननेसेसरी ब्रांच को रिमूव कर देते हैं। दिस इज व्हाट ऑल वाज फॉर टुडे सेशन। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आज के लिए? ऑलरेडी 2 घंटा से ज्यादा हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं। आई अज्यूम कि आज से क्लास मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही। दिस इज योर होमवर्क कि मैं जो तुमको एग्जांपल कराया वो सैलरी वाला, उसके लिए तुम डिसीजन ट्री प्लॉट करो, वही प्लॉट ट्री वाले मेथड से यू कैन प्लॉट इट वेरी इजीली। मैं कुछ डेटा सेट देता तुम उसके लिए अप्लाई करो, ठीक है? चलो, कोई क्वेरी? शुड बी वाइंड अप टुडे सेशन? वंशिका, शशांक, should we wind up? Any queries as of now? कोई फीडबैक, कुछ भी? But any question, queries session, I'm free. If not, let us have a session some कुछ I guess कल शायद मैं available नहीं रहूं, most probably, I don't know. और परसों भी शायद मैं नहीं रहूं, but I'll try to have a class परसों. But with this हमने अपना module 4 complete कर दिया। हमारा module 4 is completed. Now we have 4 more modules to do. I guess इतना से तुमको पता लग रहा होगा कि why the underlying mathematics is important. मैं सीधे तुमको लाइब्रेरी पढ़ा सकता था, बट द थिंग इज आई वांटेड कि तुम उसका मैथमेटिक्स समझो, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेता हूँ। वो मैथमेटिक्स क्लियर होगा, इधर तुमको बस क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, वहां से सिंटैक्स कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है, बस। ठीक है, शुड बी वाइंड अप? So let us meet in next session with our next topic. Until then, good night.